कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे. So आई एम बैक again with today's video on the topic of binomial theorem, and this will be the lecture number 2. So if you're someone who is new to this particular channel, then I am uploading content on the topic of mathematics for class 11th and 12th who are preparing for the school level as well as for any competitive form of examinations. All right. So if you are following these lectures, then you have already got now कि last class में हम लोग already started with the binomial theorem, and we have basically covered the basics of binomial theorem, like how is the expansion written in terms of in the binomial coefficients, okay, and how is the general term written, and things regarding them, okay, and we have already talked about some important notes as well as in the previous lectures. So if you're someone who haven't watched the previous lecture, then definitely go to the description box and check out the playlist on the binomial theorem. Okay, so it must be in the description box and also in the I button over here. Okay, so with this, let me start with today's lecture, and this is lecture number 2. All right. So okay, so today's goal will basically be on the solving some important question on the topic of general term, and as well as to see the questions which basically comes in the JEE mains and JEE advanced examination is a question of coefficients. Okay, and after then we will move forward to another important segment of questions, that is the remainder and the divisibility problems. All right, the remainder and the divisibility problem. So these two basically are very important portion which are basically the basic foundation of the binomial theorem, and they play a very crucial role, and there are a lot of areas where you will find that there will be use case of the taking out. Basically this is just an application of general term only. All right, so with this let us get started, and before starting today's lecture I would take a time to start today's discussion by a small recap. Okay, so if you have watched the previous lecture, then you might have know that whenever we were binomial theorem was basically discussing about the expansion of a higher order or higher power of a binomial expression. So for example, we have a binomial expression x plus y, and which is raised to the power n. Then we basically express, and where n is basically a positive integer, Okay, so n is basically a positive integer. Okay, that means you can say it is a natural number. Okay, it is a natural number because for whole number it is obviously 0. So yeah, I write it as natural number. Okay, so n is basically a natural number, and x plus y is basically a binomial expression which is expressed or raised to the power of n, and this particular expression can be written in the form of summation r is equal to 0 up to n nc r x ki power n minus r and y ki power r. Okay, so this is what we have seen in the last class regarding the expansion of binomial theorem. So binomial theorem is basically a theorem which deals or talks about the expansion of a binomial expression which is raised to any positive integer power. Okay, so with this, we have already seen about that, and we know that this particular quantity is known as a general term. So whenever we will be dealing with general term, and we have already seen some basic important note regarding to this particular binomial expansion. That is, in this particular expansion, it will have n plus 1 terms. It will have n plus 1 terms. Okay, and if we talk about what is a general term, so we write general term as t of r plus 1, that is the r plus 1th term, as written as ncr. Okay, t of r plus 1 term is written as ncr x ki power n minus r and y ki power r. So this is how you represent the general term of any binomial theorem, theorem like x plus y ki power n. Okay, so this is basically the general term of a binomial theorem. Now in today's discussion, we'll basically talk about only this particular two types of cases, okay, where we basically will be dealing like how to expand a binomial expression or a binomial theorem, and how to solve questions regarding the general term. Okay, so what type of questions you will face on basically the concept of general term is basically the coefficient problem. Okay, now this is very famous types of question. Now काफी बार एग्जाम में आपको coefficient of any particular terms of any particular variable देके क्वेश्चन पूछेगा. So that particular question is always deal with in the fashion that you have to basically consider the general term of that particular expression, and then you move forward and try to find out and try to get the coefficient of that particular variable, and from the variable term you will basically get to the value of r. Okay, so that's how you basically solve the value of coefficient question. I will take a lot of examples to illustrate my sayings of what is the coefficient problem in binomial. Now binomial में काफी ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले, जिसमें हम लोग कोफिशिएंट की बात करने वाले होंगे. ठीक है, तो आई होप दैट पर्टिकुलर डिस्कशन इज क्लियर. सो दैट्स व्हाट आई वाज राइटिंग, दैट इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर जनरल टर्म इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल, coefficient of variable. Okay, so with this also we use this particular binomial theorem to calculate the middle term. Okay, the middle term of a binomial theorem. Okay, a binomial expansion.
Similarly, we also use these types of general term in the problem of greatest term. Okay, for example, in a binomial expression, we have to know which of the following term will make the greatest term. Okay, so then also we use the concept of general term. So that's how there are a lot of applications of why we basically use the concept of general term. So I hope you will be able to understand by the form of examples. Okay, so let me try and solve out one example. Okay, to illustrate this. Okay, so the very first example that I have in front of the screen is basically a question which came up in the JEE mains paper. Okay, so I would request you, अगर आप लोग पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, then definitely go with me. हाउ एम आई अप्रोचिंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है? तो जस्ट बेयर विथ मी कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, एंड देन गो ऑन ट्राइंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर ओन, क्योंकि काफी सारा आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएगा अगर आप सर्च करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है? ऐसे इस कोफिशिएंट वाला प्रॉब्लम्स काफी मिल जाएगा, ठीक है? So the very first question, it talks about the coefficient of x to the power 5 in this particular expansion. So very first question is basically, this is a binomial expression and which is raised to the power of 5. So this is a binomial theorem. Okay, so we can explain this expansion of this particular expression is given by a binomial theorem. So for this particular expansion, I can write this expansion in form of sigma, where r is equal to 0 up to n is equal to 5, 5cr, 5cr, 2x cube whole की power 5 minus r minus 1 by 3x square whole की power r. Okay, so this is how basically you write the expansion of a binomial expression. Alright, so from here, what is basically important is basically to write the r plus 1 term. So if I say, if you have to write the general term, so you will say that what is the r plus 1 term? So the r plus 1 term, okay, so the r plus 1 term is given as 5cr 2x cube की whole की power 5 minus r into minus 1 by 3x square whole की power r. Okay, so from the general term we see that the general term is expressed in this particular fashion. ना अगर आप हमको अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू गेट टू द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5. तो x की पावर 5 कोफिशिएंट कैसे बन सकता है? तो जनरल टर्म से अगर मैं देखूं कि जनरल टर्म में जो वेरिएबल्स है उसका पावर में अगर क्लब करने की कोशिश करूं, तो व्हाट आई विल गेट x की पावर, this is basically 15 minus 3r. Okay, and from here the power of x I will get it as x की power minus of 2r. So this particular thing will make up or club to basically make the power of x as 15 minus 5r. 15 minus 5r. I hope this particular thing is clear. तो अगर 15 माइनस 5r अगर मेरे को x का इस दोनों एक्सपेंशन से, मतलब दोनों जनरल टर्म का उसको x को क्लब करने से अगर 15 माइनस 5r मिलता है, तो और मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वी हैव टू बेसिकली फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5. तो अगर x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, दैट मींस 15 माइनस 5r का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, ठीक है? तो अगर 15 माइनस 5r का वैल्यू 5 होना चाहिए, तो यहाँ से मुझे r का वैल्यू क्या मिलेगा? तो यहाँ से मुझे r का वैल्यू 2 मिलेगा, ठीक है? सो इफ आई टेक 5 ऑन दिस साइड, इट विल 10 इज इक्वल टू 5r, सो r का वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगा. दैट मींस that the third term of this particular binomial expansion of this particular expansion is basically the term which represent the coefficient which will have a variable x की power 5. Okay, which will have the variable x की power 5. I hope that particular thing is clear. और अगर x की power 5 मुझे थर्ड टर्म में मिलने वाला है, that means the except the variable part will, whatever part is left, that basically part will represent the coefficient of that particular expression, that is x की power 5. That is what we are required to find this question. So अगर मैं पूछूं कि what is the coefficient, you will say the coefficient of x की power 5 in the expansion is how much? In the expansion of x to the power 5 in this particular expression is basically 5c2, and what are the variable terms remaining? That is 2 to the power 5 minus 2 is 3, and similarly 1 by 3 whole to the power 2. Okay, so this is basically the coefficient term that basically makes up the coefficient of x to the power 5 in this particular expansion. So from here, if I evaluate this particular term, I'll get 5c2, and we already have seen by shortcut method that 5c2 is calculated in the fashion 5 into 4 divided by 2, because हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जितना टर्म यहाँ नीचे लिखा होगा उतना बार इसका कंटिन्यूस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड बाय व्हाटएवर नंबर इज रिटन इन द डाउन थिंग. ओके, so that is how you basically do the shortcut for NCR. Okay, so from here I will get the value of 5c2 is basically equal to 10. अगर याद हो जाए तो अच्छा है, ठीक है? So this is basically 10. So 10 into 2 की power 3 is basically 8, and whole divided by 1 by 3 की power square minus of 1 by 3 का whole square is basically 9. Is basically equal to 9. That's how, what's the answer of the question is basically 80 by 9. 80 by 9. So from here you got to the answer of this particular question is basically option number B.
So I hope this particular question or example was clear. Okay, this is a very simple question that basically you can expect in JEE mains question, and this is a JEE main previous year question only. So I hope this particular thing is clear. ठीक है, तो ऐसा टाइप का सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनता है कि जनरल टर्म का और कोफिशिएंट के बेसिस में. ठीक है, अगर आपने सही से आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, देन यू डेफिनेटली विल गेट टू द राइट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट. ओके, सो विद दिस लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is basically again a question from the recapitulation of the previous lecture. Now, this particular question says that if the we have binomial expansion of for this particular expression, okay, that is 4x minus 5 minus of 5 by 2x whole cube of 2022, and it says that the 111th term from the end of this particular expansion from the end. तो इसका जो from the end वाला जो concept का logic था, we have already discussed in the previous class. तो अगर आप अभी तक आपने अगर previous lecture नहीं देखे होंगे, then definitely go to the description box of today's lecture. Okay, इस वीडियो का description box में जाके देखो, उसमें playlist मिलेगा, binomial theorem का playlist मिलेगा, उस playlist पे जाके first वीडियो देखना है. ठीक है, so अगर आपने देख रखा होगा then very good. Okay, so it is basically it is saying about the 111 term sorry 1011 term from the end of this particular binomial expansion is 1024 times. Okay, 1024 times the 111 term 111th. Okay, 111th term from the beginning. Okay, so this is basically ये आर गलती से प्रिंट हो गया. So it is basically talking about कि 1011 term from the beginning. Okay, is equal to 1224 times of the 1011 term from the end of this particular binomial expansion. तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन अगर मैं पूछना चाहता हूँ, इस binomial expansion में कितने टर्म्स होंगे, तो you will say there will be 2023 times. Okay, so if I talk about what is the 1011 term from the beginning of this particular binomial expansion, so what you will say that the 1011 term, that basically means that is 1010 plus of 1, that means r का वैल्यू 1010 है. So from here I will get 2022 c 1010. Okay, c 1010 into 4x by 5 whole की power 2022 minus 1010, that will give me 1012. Okay, 1012 into minus 5 by 2x minus 5 by 2x whole की power okay, whole to the power 1010. Okay, so this is how we get the 111 term, sorry 1011 term from the beginning of this particular binomial expansion. And also if we try to find out what is the 111 term from the end, so 111 term from the end is same as 111 term from the beginning, from beginning of if I exchange this particular thing and I can write it as 5x, sorry 5 by 2x, 5 by 2x minus 4x by 5 whole की power 2022. Okay, so I took the negative sign common, and since the negative one to the rest of the power of even number, we always give a positive result. So this is same as the term from the end is same as the term from the beginning if you only interchange the binomial variates. If you only interchange the binomial variate, so this is how we basically get to the ending वाला term. ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर पूछूं what is the 1011 terms, so you will say that particular term is given out as 2022 times of n 2022 c 1010. Okay, 5 by 2x की power 1012 into minus 1 by 4 minus 4 by 5 x whole की power 1010. ठीक है, और क्वेश्चन में जो बोला गया था that is basically ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म है is basically equal to 1024 times of this particular relation that is 2020 c 1010 5 by 2x whole की power 1012 into minus 5 by 4x whole की power 1010. Okay, 1010. ओके, सो यहाँ से मैं अगर सबसे पहले अगर मैं कैंसिल आउट करने की कोशिश करूँ, तो दिस पर्टिकुलर टर्म विल गेट कैंसिल आउट विद दिस पर्टिकुलर टर्म. ओके, सो यहाँ से मैं देखूंगा तो मेरे को बेसिकली जो रिलेशन मिलने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, दैट इज बेसिकली द टर्म विच विल बी लेफ्ट इज द टर्म्स. ओके, द टर्म्स विल बी लेफ्ट. यहाँ पे जो माइनस वाला टर्म है ना, मैं इसको हटा भी सकता हूँ बिकॉज -1 की पावर इवन अगेन विल बी पॉजिटिव इन क्वांटिटी. सिमिलरली इस पर्टिकुलर प्लेस में जो नेगेटिव वाला साइन है यहाँ पर भी उसको भी मैं हटा सकता हूँ. ठीक है, तो इसी के साथ मुझे क्या मिलने वाला है, दैट क्वांटिटी आई विल गेट इज बेसिकली 4x by 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है, मैं इसको काट दिया इसके साथ. ठीक है, इज इक्वल टू 1024 टाइम्स ऑफ 5 by 2x होल स्क्वायर ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा
यहाँ से मैं अगर दोनों साइड को क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, दोनों साइड को मैं इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। सो आई विल गेट इट एज 4x इन बाई 5 इंटू 2x, ओके, इंटू 2x बाई 5 होल स्क्वायर is equal to 1024, is equal to 1024, and 1024 is basically a square of this is basically 2 की power 5, that is 32 का whole square, okay, 32 का whole square. So this will give me the relation that is 16, sorry, this will give me the relation that is 8x square divided by 25 is equal to 32, is equal to 32, okay. And from here I'll get to the value of x square, okay, I will get to the value of x square as equal to 32 into 25 whole divided by 8. So from here I can cancel out 8 as 4 times. So from this particular relation, I'll get mod of x. I'll get mod of x because if I take square root of both the side, I'll get mod of x is equal to 2 into 5. That is equal to 10. Okay, that is equal to 10. Okay, but it doesn't matches with the answer. So let me check for any mistakes. Okay, any mistakes. Okay. So from here, if I try to find out the mistake, okay, so there is a very big mistake from my side. Okay, I'm sorry for the mistake. In the question, it was mentioned that this is basically this particular thing is not over here. This is mentioned in the question that is a 1011 term from the end is 1024 times the 1011 times from the beginning. Okay, so that's a very big mistake from my side. That means this 1024 will be on this particular side. That means this particular quantity will get multiplied with 1024. Okay, so that's a very big mistake from my side. Okay, so from here this will come on this particular end, this will come on this particular end. So since this will come on this particular, we can also write this 1 by this quantity. Okay, so this will give me 1 by 2 give 10, that means 1 by 32. Okay, so this will quantity will give me 1 by 32. Okay, so that's a very big mistake from my side, I'm sorry for that. Okay, so with this I'll get to the relation of x square, I'll get to the relation of x square is equal to 25 divided by 32 into 8. So we know that 25 can be written as 5 square and 32 into 8. 32 can be 2 ki power 5 and 2 ki power 8 can be clubbed up as 2 ki power, okay, 2 ki power 8. Okay, this can be clubbed as 2 ki power 8. That means it will give me the relation that is 5. So if I from here, if I take square root on the both the side, I'll get to the relation of x is equal to, or mod of x is equal to 5 by 2 ki power 4 and 2 ki power 4 is equal to 16. So that will give me the relation that is mod of x is equal to 5 by 16. So that will give me the relation for mod of x is equal to 5 by 16. And with this I get to the right answer to the question is basically option number A. So with this I get to the right answer to the question is basically option number A. ओके, सो आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज क्लियर. ठीक है, काफी सिंपल टाइप का क्वेश्चन था. ठीक है, सो क्वेश्चन में मैं गलती से इंटरप्रेट कर दिया था. ओके, सो दैट्स अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड. ओके, बट आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एंड देन ट्राई टू इंटरप्रेट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्वेश्चन. ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन कभी कभार कुछ एग्जाम में जल्दबाजी में गलती हो जाता है. ठीक है, ठीक है, तो आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा था. ठीक है, रिगार्डिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, सो विद दिस let me move to the another important topic of binomial expression, that is basically the concept of middle term. ठीक है, तो काफी बार क्वेश्चन में होगा कि आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ मिडिल टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सपेंशन. ठीक है, तो अगर मैं पूछूं, ओके, सो फ्रॉम हियर there comes a very important types of question that is basically concept regarding the middle term discussion. तो अगर मैं सिंपल एक बाइनोमियल एक्सपेंशन ले लेता हूँ, सो लेट मी टेक अप सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन. ओके, दैट इज बेसिकली x प्लस वाई की होल की पावर n, where n is basically a natural number. Okay, n is a natural number. Okay, so if I have a binomial expansion which is basically x plus y की power n, and you have to find the middle term, so the middle term will depend on the value of n, will depend on the value of, okay, on the value of n. Okay, so regarding whether the n is even or n is odd, the value of the middle term will vary. Okay, so it will basically depended on, so it will depend on, okay, so it will depend on the value of the on the value of n, whether it is a even or odd. Okay, whether even or odd.
ठीक है। तो ये काफी सिंपल चीज है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि हाउ डू वी बेसिकली गेट टू द मिडिल टर्म। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज बेसिकली, क्योंकि मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट में एन का वैल्यू में डिपेंड क्यों कर रहा है, अगर आप ऐसे पूछना चाहते हो कि व्हाई डज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन, सो आई हैव अ गुड आंसर टू दिस, बिकॉज व्हेन वी बेसिकली एक्सपेंड फॉर दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सपेंशन वी बेसिकली हैव n plus 1 टर्म्स। सो अगर मैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करूं, सो आई विल बेसिकली हैव n plus 1 टर्म्स इन द एक्सपेंशंस। Okay, so I will have n plus 1 terms. So in n plus 1 term, regarding whether n plus 1 का जो वैल्यू है वो अगर इवन है या ऑड है, क्योंकि मान लो आपके पास कोई चार ऑब्जेक्ट्स ऐसे चार, ठीक है। सो अगर मैं पूछूं इस चार ऑब्जेक्ट से मिडिल वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो यू वोंट बी एबल टू से व्हिच इज द फॉलोइंग इज अ मिडिल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप बोलोगे ये दोनों ऑब्जेक्ट बेसिकली मिडिल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट सिंस अगर मैं उसके जगह में अगर पांच ऑब्जेक्ट दे दूं, if I have a five objects, if then I say you to basically choose which is a middle object, so you will say that this particular quantity is a middle object. That means basically unique object is basically a unit a middle object. Okay. So अगर odd number रहा तो that means we are basically able to get a unique middle term. But अगर even number रहा तहाँ वहाँ in that particular situation we are not getting a basically one unique value of one middle term. Rather we get two middle terms. Okay. So that's basically the condition of middle term. And middle term का condition पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि basically the whenever we basically talk about the greatest term of any binomial expansion, we will rather see that this is the middle term which is the greatest term of any binomial expansion. We'll see that the greatest term is basically the middle term in the binomial expansion, that I will write it as note in the in this particular thing only. Okay, so how do we basically calculate, so regarding, so if n का जो वैल्यू है, अगर n का वैल्यू इवन है, अगर n का वैल्यू इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आने वाला है दैट इज बेसिकली n plus 1, और n plus 1 दैट मींस विल बिकम एन ऑड नंबर। मतलब अगर n का वैल्यू इवन है देन वी बेसिकली गेट वन मिडिल टर्म, देन वी बेसिकली गेट वन मिडिल टर्म। तो मैं अगर पूछूं कि which of the following is the one middle term, so you will say me, so in this case only one, okay, only one middle term is possible, only one middle term is possible, is possible, okay, is possible, and that particular term is given out by, and that is basically, okay, that is the n by 2 plus 1 at term, okay, n by 2 plus 1 at term, n by 2 plus 1 at term is basically the middle term. So if you are interested to write what is the particular term, that basically n plus 2 plus 1, that means the r ka value is n by 2. So from here I will get nc n by 2. So because the expansion is x plus y ki power n, that is nc n by 2 x ki power n by 2 and y ki power n by 2. Okay, so this is basically the middle term of any binomial expansion whose power is basically even. ठीक है। तो अगर पावर इवन है देन वी बेसिकली हैव ओनली वन मिडिल टर्म पॉसिबल। बट अगर पावर ऑड है, दैट मींस इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर, so if n is equal to an odd number, okay, then we basically have the total number of expansion in the series, in the expansion will have n plus 1 terms, and n plus 1 will again become an even number. That means in that particular terms we will have even number of terms. That means in these particular cases we have two middle terms, two middle term possible. Okay, so in this particular case we have two middle terms. Okay, two middle terms possible. So we will have two middle term possible for this particular expansion. Okay, so we will have two middle term possible, and those two middle terms are basically n plus 1 by 2th term, n plus 1 by 2th term, and n plus 3 by 2th term, n plus 3 by 2th term. Okay, so these are basically the middle term of any binomial expansion whose power is an odd number. That means you can write those terms as, so for example I write this first term, so this particular term will become nc. So if I'm subtract 1 from here, so it will become n minus 1 whole divided by 2 x ki power, okay, n plus 1 by 2 into y ki power n minus 1 by 2. Okay, so this is basically the middle term corresponding to n plus 1 by 2th term. Okay, similarly n plus 3 by 2th term will be equal to nc n plus 1 by 2 x ki power. So from here I will get to the power of x as n minus 1 by 2, and y का पावर जो मिलेगा that is basically n plus 1 by 2, n plus 1 by 2. So these are basically the two middle terms of any binomial expansion which basically correspond to a power which is odd number, which correspond to a power of odd number. Okay, which correspond to the power of odd number. That means when n is odd, these two terms basically represent the middle term. These two terms represent the middle terms. Okay, सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा जब whenever we basically have to calculate कि एक particular binomial expansion दे रखा है and the middle term of the particular binomial expansion is given out in so by given condition, ठीक है।
उस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन से आपको कोई अननोन वैल्यू प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर सिंपल थिंग्स आर क्लियर, ओके। सो एक सिंपल एक दो दो चीजें जो आपको याद रखना है, दैट इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, some of the very important note. That first note I have to talk about is basically whenever there are two middle term in the binomial expansion, okay, whenever we have two middle terms in the expansion, then they are basically and then their binomial coefficient are basically similar. So if you see from here in this particular situation, so in this case we have two middle terms. So from here, if you see the binomial coefficient, you will have NC n minus 1 by 2 and NC n plus 1 by 2. And we already know a very important relation, that is NCR is already equal to NC n minus R. That is NCR is equal to NC n minus R. So from here, if I have two middle terms, so in that particular scenario, in this particular scenario, their binomial coefficients are equal. Okay, so this is very important note. Okay, so whenever we have two middle terms in any binomial expansion, then their binomial coefficient, I'm not talking about coefficient, I'm talking about binomial coefficient, then their binomial coefficient are similar or are equal. Okay, and also another important, very very important note is basically the binomial coefficient, okay, the binomial coefficient of middle term of any expansion, okay, in an expansion is the greatest binomial coefficient, okay. So this is another very important note that you must remember in mind. So the binomial coefficient of the middle term in any expansion is the greatest binomial coefficient, binomial coefficient So many times in the question you will be asked to calculate the greatest binomial coefficient, not the coefficient but greatest binomial coefficient. Okay, similarly काफी नेक्स्ट टॉपिक ऐसे भी रहेगा जहां पर हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे, बट दैट इज डिफरेंट थिंग फ्रॉम कैलकुलेटिंग द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट. सो काफी बार क्वेश्चन में अगर सिंपल एक्सप्रेशन दे रखा है एंड देन वी हैव टू बेसिकली कैलकुलेट फॉर द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, देन यू बेसिकली हैव टू कैलकुलेट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, So in case the number n is odd, then we have two binomial coefficient which is the greatest binomial coefficient. Similarly, in the case when n is even, we will have only one binomial coefficient which is the greatest binomial coefficient. Okay, I hope that particular discussion is clear. ठीक है, तो ये काफी सिंपल चीज है बट काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है. ओके, सो लेट मी टेक अपॉन अ वेरी सिंपल एग्जांपल. ओके, सो लेट मी टेक अपॉन अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट a given question. Okay, so ये काफी जगह एक फेमस जगह क्वेश्चन है. So basically you have to calculate for the middle term of the expansion 1 plus x to the power 2n. Okay, so you have to calculate for the middle term of 1 plus x to the power 2n. Now we have see from here that 2n is basically an even quantity. That means it will have 2n plus 1 number of terms. And from here, if we, or the number of terms is odd number of terms, that means we will have the only one middle term, and that particular middle term is will be given as 2n divided by 2 plus 1th term. So that particular middle term is basically the 2n by 2 plus 1th term, which is the middle term. Okay, term is the middle term. Okay, so from this particular thing we can write this as 2n by 2 plus 1th term is can be given as, that is 2n cn. Okay, because this will become r, यहाँ से r का वैल्यू जो मिलेगा मुझे, that is n, so that will be 2n cn 1 की power n and 2x की power n. So from here I will get x की power n. But since in the question we basically have to calculate the binomial coefficient of the middle term, that will basically give me the binomial coefficient as 2n cn. Okay, 2n cn, and we know that for the expansion of 2n cn it can written as 2n factorial divided by n factorial into n factorial. Okay, so from this particular thing I will get it as, I can write this particular expansion as 2n into 2n minus 1 so on up to 2n minus n plus 1 into n and so on up to 1. So from this particular thing divided by n factorial, and we see that this is 1 into n is basically n factorial, and this particular n factorial cancel, and we are left with 2n into 2n minus 1 into 2n minus 1 minus n plus up to divided by n factorial.
Okay, so from here divided by n factorial into x की power n, ठीक है, into x की power n. So from here you can also simplify this particular relation. You can simplify this simple relation as, since there is 2n minus 1 and so on fashion. Okay, so on this particular fashion, so we can also do an important thing, that is basically take 2 common from this particular n number of terms. Okay, so we will have n number of terms over here. So from here, from the even number of terms, we will take 2 common from that, and from all the terms if we try to take 2 common, so I will be left out with some relation which will look like, which will sound similar to, which will similarly look like. Okay, that is basically if I take 2 common from all this particular relation, and then we take out in factorial, so we will basically have left with the relation that is basically 1 into 3 into 5 into, and dot 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 continue to 2n minus 1 whole divided by n factorial whole divided by n factorial into 2 की power n into x की power n. I hope this particular expansion can be simply solved by simplification from this particular relation. Okay, इसको आप थोड़ा simplify कर लेना, then you will basically get to this answer something like this: 1 into 3 into 5 into and so on up to 2n minus 1 whole divided by n factorial. ठीक है, so whole divided by n factorial, and the remaining n even number terms will basically be encountered in this particular relation, that is 2 की power n. Okay, so we take 2 common from all the even terms, and then we'll get to the n into n minus 1 into n and similar terms. So simplify, इसको simplify कर लेंगे तो इस particular relation को आप जरूर से पहुंच जाओगे. ठीक है, so ये काफी सिंपल सा टाइप का क्वेश्चन था. ठीक है, ओके, सो विद दिस लेट मी सॉल्व सम सिंपल एग्जांपल्स. तो फिर से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उठाना चाहता था. ठीक है, so this is again a previous year question. Now this question talks about the coefficient question only. So in this question it talks about the sum of the coefficient of three consecutive terms in a binomial expansion of this particular expansion, that is 1 plus x की power 1 plus x की power n plus 2 1 plus x की power n plus 2. हम लोग ने ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ लिया था इन द लास्ट लेक्चर. मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने लास्ट लेक्चर अभी तक देखे नहीं होंगे, देन इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वाला वीडियो देखो. लास्ट वाला वीडियो में मैंने काफी सारी चीजें बताया था. वो चीजें अगर नहीं पता चलेगा, देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग्स. ओके, सो लास्ट वाला लेक्चर जाके देखो एंड देन यू कम टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी एक बड़ा फॉर्मूला पे बातें किए थे, दैट इज बेसिकली एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1 इज सिंपली इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई आर. ओके, तो ये वाला रिलेशन ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर पे देख चुके थे. ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, फ्रॉम हियर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन द क्वेश्चन. इट टॉक्स अबाउट the consecutive terms of this particular binomial expansion. So अगर मैं पूछूं कि what is the basic, so it is said that the consecutive terms का जो coefficient है, they are basically in the ratio 1:3:5. So ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको JEE एडवांस में भी मिल जाएगा. 2013 का एक प्रॉब्लम था जिसमें ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने और एक JEE मेंस में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था. तो फ्रॉम हियर यू कैन गेस दैट द JEE मेंस बेसिकली टेक्स अप द क्वेश्चन व्हिच आर बेसिकली प्रीवियसली आस्क्ड इन JEE एडवांस, ठीक है. तो यहाँ से मैं अगर एक assumption लेता हूँ, so from here let me assume that is tr minus 1 let in spite of tr minus 1 I will assume this as t of r plus 1 and t of r plus 2 are basically the three consecutive terms, okay, consecutive terms. Okay, they're basically the three consecutive terms from this particular expansion, for this particular expansion. ठीक है, तो इस particular expansion के लिए मैं अगर बोलता हूँ कि tr plus 1 and tr plus 2 are the three consecutive terms of this particular binomial expansion, then they are in the question it also mentioned that they are in the ratio of 1:3:5. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे. तो सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है दैट इज बेसिकली दैट मीन tr plus 1 divided by tr is in the ratio of 3:1. ठीक है, सो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक क्वेश्चन लिखूंगा, that will be regarding the tr plus 1 term is will be given as nc 2n n plus 2 cr into x की power r whole divided by n plus 2 c r minus 1 x की power r minus 1. But since we are talking about the I'm sorry, since we are talking about only binomial coefficient, so the coefficient for this particle will not include x. So from here I will get to the relation something like this, and this will be equal to 3. Okay, so यहाँ से मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ इस पर्टिकुलर रिलेशन को बाय द फॉर्मूला, तो दिस विल बिकम n plus 2 minus of r plus 1 होल डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 3. ठीक है, so यहाँ से मुझे मिलेगा दैट इज बेसिकली n plus 3 minus r is equal to 3r. so यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, so I will get this relation as n minus 4r is equal to minus of 3. n minus 4r is equal to minus of 3. ये पहला मेरे को इक्वेशन मिल गया यहाँ से.
So from the second relation, I can also from the second relation, that is tr plus 2 divided by tr plus 1 is equal to 5/3. So यहाँ से मेरे को और एक इक्वेशन मिल जाएगा that will basically involve similarly वो वाला टर्म जो आने वाला है that is basically n plus 2 cr plus 1 divided by n plus 2 cr. So यहाँ से मुझे रिलेशन मिलेगा that is n plus 2, ठीक है, n plus 2 माइनस ऑफ r के जगह मैं चेंज कर दूंगा r plus 1 से, ओके, r के जगह चेंज कर दूंगा जस्ट बाई r plus 1, ओके, plus 1 डिवाइड बाई r plus 1, ठीक है, इज इक्वल टू 5/3. सो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ इस पर्टिकुलर रिलेशन को, सो फ्रॉम हियर -1 एंड +1 विल कैंसिल एंड दिस विल बी n minus r plus of 2 is whole multiplied with 3 is equal to 5r plus 5. सो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 3n माइनस ऑफ 3r प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 5r प्लस ऑफ 5. तो उसके बाद मैं अगर इसको फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ दैट विल गिव मी 3n माइनस 5r माइनस 8r इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1. सो यहाँ से मेरे को सेकंड वाला रिलेशन मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा इन्वॉल्विंग n एंड r. तो दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है. सो दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ. सो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 3n माइनस ऑफ 12r इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9 यहाँ से मिलेगा 3n माइनस 8r, ओके ये 12 है नॉट 42, इज 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1. तो इसको मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो फ्रॉम द बोथ साइड 3n, दिस 3n विल कैंसिल एंड दिस विल बिकम माइनस ऑफ 4r इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8. सो यहाँ से मुझे r का वैल्यू मिल जाएगा. फ्रॉम हियर आई विल गेट टू द वैल्यू ऑफ r एज 2. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट टू द वैल्यू ऑफ r एज 2. सो यहाँ से मुझे r का वैल्यू 2 मिल जाएगा. दैट मीन्स that definitely implies that the second term, the third term, and the fourth term are the consecutive terms whose basically coefficients, whose coefficients are the whose coefficients are the basically whose coefficient are basically in the ratio 1:3:5. ठीक है. So simple question में क्या पूछा था, r का वैल्यू मिल गया. So we have to basically find out the sum of the coefficient, and sum of the coefficient क्या होगा, is basically n plus 2c, r का वैल्यू 2 है. So यहाँ से since r का वैल्यू 2 है तो the first term, that is basically second term, will have, so since we are dealing with coefficients, so the first value of r from in this particular question will have, यहाँ से r का जो वैल्यू इधर 1 हो जाएगा, and n plus 2c, this is 2 plus n plus 2c 3. ठीक है. so मुझे r का वैल्यू मिल चुका है. सिमिलरली we will have to find for the value of n. सो मैं अगर r का वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर फर्स्ट इक्वेशन से फिर से पुट कर देता हूँ, फ्रॉम हियर n minus 8 is equal to minus of 3. so from here I will get to the value of n as, I will get to the value of n as 5. okay, so मुझे n का वैल्यू 5 मिल जाएगा. so इस पर्टिकुलर रिलेशन से अगर n का वैल्यू 5 मिल जाएगा तो दिस इज 7c1 plus 7c2 plus 7c3, and the value of this particular summation, that is 7c1 is 7, 7c2 का जो वैल्यू होता है that is basically 7 into 6 by 2, that will give me 21. and similarly 7c3 का जो वैल्यू होता है, 7c3 का वैल्यू होता है 7 into 6 into 5 होल डिवाइडेड बाई 6, 2 3 फैक्टर है, that is basically 6. तो यहाँ से मुझे 35 मिल जाएगा. अगर मैं इन तीनों नंबर को ऐड करूँ, so from here I will get 28 plus 35, that is basically 4, this is 63. okay, so from here I will get the answer as 63. So from here I will get the answer as 63. okay, which is option number A, and this is the value of 73. okay, so with this I get the answer of this particular question as option number A. ठीक है. तो काफी सिंपल टाइप का क्वेश्चन था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड द ओनली थिंग दैट यू बेसिकली हैव टू रिमेंबर इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू n minus r plus 1 होल डिवाइडेड बाय r. ओके, आई होप दैट पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर. ठीक है. इसी के साथ लेट मी मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है. ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है. ठीक है. और ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैं. ठीक है, विच इज नॉट वेरी सिंपल, बट यू हैव टू बेसिकली थिंक ऑफ की ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, कि यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन व्हिच कैन बी जनरेटेड फॉर द कोफिशिएंट पावर ऑफ द वेरिएबल्स. ठीक है. सो क्वेश्चन में अगर मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, so in the question it says that it talks about if the coefficient of x and x square in this particular expansion. So expansion जो देखा है दे रखा है, it is not simple as a binomial expansion, but is basically the product of two binomial expansions. So it is basically the product of two binomial expansion. So it says that the x का coefficient is 4 and x square का coefficient is -5. So from that you have to basically get to the value of p and q. ठीक है. तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करूँ फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कैसे कैसे बनेगा.
अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन से देखूं तो इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन से मुझे एक ऐसा टर्म मिलेगा जहाँ से 1 मिलेगा, जहाँ से x का कोफिशिएंट नहीं रहा, ठीक है, जहाँ पर x का कोई पावर ही नहीं है। एंड सिमिलरली इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन से मैं x की पावर 1 ले लूं, दैट विल बी अ पॉसिबिलिटी कि x की पावर 1 इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन से x की पावर 1 ले लूं और इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन से x की पावर 0 ले लूं। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इट विल गिव मी द प्रोडक्ट एज x की पावर 1। एंड सिमिलरली देयर विल अनदर केस, यहाँ से मैं x की पावर 1 ले लूं एंड यहाँ से मैं x की पावर 0 ले लूं, दैट विल आल्सो yield me a result which basically give me the coefficient which will give me the result for x। okay, I hope this particular thing is clear। थोड़ा सोचो कि यहाँ से x का इन पूरा प्रोडक्ट से x को जनरेट कैसे करना है। यहाँ से कैसे कैसे टर्म मिलेगा, 1 मिलेगा ऐसे, मतलब x के पास 0 टर्म मिलेगा, x के पास 1 वाला टर्म मिलेगा, x के पास 2 वाला टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन अप टू x के पास p वाला टर्म मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से कैसे टर्म मिलेगा, दैट इज x के पास 0 मिलेगा, x के पास 1 मिलेगा, एंड सिमिलरली x के पास q वाला टर्म मिलेगा। बट मुझे चाहिए क्या, मुझे x का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से 1 ले लो और यहाँ से x की पावर 1 ले लो, सिमिलरली यहाँ से x की पावर 1 ले लो, यहाँ से 1 ले लो, ठीक है। तो आई होप दिस पर्टिकुलर सिंपल थिंग इज क्लियर, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन कि मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। सो अगर मैं वही लॉजिक पे अगर बिल्ड करके मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, सो सबसे पहले यहाँ से मैं x की पावर 1 का कोफिशिएंट लेना चालू करूँ, सो यू विल सी दैट दिस बेसिकली द फर्स्ट टर्म, sorry, the second term which of this particular expansion which will have a power of x, that will give me the coefficient will be as written as pc1, and for this particular relation I'll get to the coefficient of x की पावर 0 as, I'll get to the coefficient of x की पावर 0 as the coefficient of x की पावर 0 will be, so this will be multiplied with qc. The coefficient of x plus 0 will be the first term from this particular relation, that is qc0, 1 की power q. And plus there will be another situation when I will take power of x from here in this particular expansion. So for that it will become qc1, that is the second term, minus 1 की power 1, okay, multiplied with pc0, the first term of this particular, there will be 1 की power p, okay. So which will give me, that is pc1, and pc1 is p plus, and this will give me minus of q, okay. So this is basically p minus q, and p minus q का जो वैल्यू दे रखा है in the question it is mentioned as, in the question because it's a coefficient of x, it is the coefficient of x, okay. So this coefficient of x is given as p minus q and it is said in the question as 4. This is the first equation. Similarly for the coefficient of x square, for the coefficient of x square, from this particular binomial expansion can be written as, this is basically x square कैसे बन सकता है कि पहला वाला इक्वेशन से 1 ले लो एंड सेकंड वाले एक्सपेंशन से x स्क्वायर ले लो। सिमिलरली पहला वाला एक्सपेंशन से x स्क्वायर ले लो, सेकंड वाला एक्सपेंशन से 1 ले लो, और एक केस बन सकता है कि पहला वाला एक्सपेंशन से x ले लो और सेकंड वाला एक्सपेंशन से फिर से x ले लो, ठीक है। तो यहाँ से 3 केसेस बनेंगे। तो पहला वाला जो केस का मैं बात कर रहा था बेसिकली पी सी टू एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, ओके, मल्टीप्लाइड विथ यहाँ से 1 वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, ये मैं सेकंड वाला केस की जब बात कर रहा था बेसिकली qc2 इंटू माइनस 1 की पावर 2, और थर्ड वाला जो केस बनेगा दैट बेसिकली pc1 x की पावर 1 वहां से बन जाएगा, एंड सिमिलरली दिस विल बिकम qc1 एंड माइनस 1, ओके। सो ये बेसिकली मुझे बन जाएगा दैट बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड दिस इज गिवन एज माइनस ऑफ 5। सो फ्रॉम हियर इफ आई एक्सपेंड दिस आई गेट एज p इंटू p माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2 प्लस, सॉरी हाँ, प्लस q इंटू q minus 1 whole divided by 2 plus, this will be, sorry, this will be not plus, this will be minus of p into q is equal to minus of 5, ठीक है। सो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल गया, और काम करो कि यहाँ से p q का वैल्यू उठाओ और इस रिलेशन में पुट कर दो। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट टू द वैल्यू ऑफ q एज p minus 4 is equal to q। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलेशन, अगर इस रिलेशन को यूज करते हो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देते हो, सो फ्रॉम देयर यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से आपको p और q का वैल्यू दोनों मिल जाने वाला है। सो अगर मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश करूँ तो आई विल गेट एज p स्क्वायर माइनस p प्लस q स्क्वायर। सो q के जगह मैं अगर p माइनस 4 पुट कर दूँ, सो आई विल गेट इट एज p माइनस 4 इंटू p माइनस 5, ओके, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ p इंटू p माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक दिख रहा है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इफ यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक दिस p स्क्वायर माइनस p प्लस दिस विल बिकम p स्क्वायर माइनस ऑफ 20, सॉरी प्लस ऑफ 20 माइनस ऑफ 9p, ओके, माइनस ऑफ 2p स्क्वायर प्लस ऑफ 8p is equal to minus of 10. So for this particular expansion it will become
कि यहाँ से अगर देखोगे तो क्वाड्रेटिक टर्म नहीं रहने वाला है, क्योंकि पी स्क्वायर विल एड अप एंड विल कैंसिल विद माइनस ऑफ पी स्क्वायर, माइनस ऑफ 2p square. So with this we will left out with the terms as minus of 10p plus of 8p will become minus of 2p. And similarly, if I take plus 20 on the right hand side, I will get minus of 30p minus of 30. That will give me the value of p as 15. So from here I will get the value of p as 15. So अगर p का value 15 मिल गया, so q का value क्या मिलेगा? तो from here the value of q will be equal to 11. So अगर p और q का value मिल चुका होगा, so from there I can calculate this expression, that is 2p plus 3q. 2p plus 3q is equal to 2 times of p is basically 30 and 3 times of q is basically 33. So from this I will get to the value of 63. Okay, so from this I will get to the value as 63, which is basically option number D. ठीक है, तो काफी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था कि whenever you are basically not given with a single binomial expansion, rather you are given with a product of binomial expansions. From that particular scenario, how to calculate the power of x के पावर कुछ वेरिएबल, ठीक है, so उसको करने के लिए आपको पॉसिबिलिटीज कंसीडर करना है. You have to consider for all the possibilities which is possible for that particular coefficient, okay, for that particular variable. I hope that simple thing is clear. Okay, तो ये काफी सिंपल टाइप का प्रॉब्लम था, बट काफी इंपॉर्टेंट था. ओके, साइमल्टेनियसली. ठीक है, with this let me move further and start the topic of another very important topic, that basically the questions involving divisibility or how to calculate the remainder, or similar type of question will also come when you have to basically find the fractional part of any number which is going to be divided by any number. Okay, so for that particular scenario, let me take a very simple example, that is basically this particular question. Okay, and in this question, this is also a JEE Mains previous year question. So this question talks about that there is a number. So let the number be n, capital N, and the number is represented as 4 की power 2022. Okay, so we have a number which is represented as 4 की power 2022, which is a very big number. And when this particular number is divided by 15, so we have to basically find for the fractional part of this particular number. We have to find the fractional part of this particular number. And this particular quantity basically means the fractional part. Okay, the fractional part, which you basically study in the chapter of function. Fractional part of a number. Fractional part of number n. Okay, that means basic number n when divided by 15. When divided by 15. So if you divide this number n by 15, you will basically be left out with a fractional part. That means basically the remainder question. तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर n नंबर को, दैट इज 4 की पावर 2022 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क. ओके, सो अगर मैं मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं समझाता हूं. सो इफ यू टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट, सो लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल. द एग्जांपल हैज 21. ओके, and when we divide 21 by 5, so we say that 5 4s are 20, so we have a remainder as 1. That means we can write 21 divided by 5 as 4 plus 1 by 5. Okay, so we can write 21 as simply as 4 plus 1 by 5. Okay, so if I talk about what is the fractional part, of this 21 divided by 5, you will say the fractional part of the 21 by 5 is the simply this particular fraction, which is 1 by 5 or 0.2. Okay, the fractional part of this particular number is simply as 1 by 5 or 0.2. Okay, तो ये काफी सिंपल सा चीज था. दैट मीन्स द रिमाइंडर बेसिकली डिटरमाइन कि जो फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनने वाला है. ठीक है, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट अगर मैं किसी भी तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, देन आई बेसिकली गेट टू द आंसर ऑफ व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर. ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट डू आई हैव टू चेक फॉर, आप बेसिकली कैसे भी करके ट्राई एंड फाइंड आउट सम काइंड ऑफ अ नंबर व्हिच इज सिमिलर टू 15. सो इफ यू टॉक अबाउट कि 15 से अगर मैं इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि वी नो कि पहले तो 4 की पावर जो 2022 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वी ऑलरेडी नो अ सिंपल टर्म, दैट इज 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो मैं एक काम करता हूं कि इस पर्टिकुलर थिंग को मैं 16 की पावर 1011 लिख लेता हूं. ठीक है, and 16 is a such quantity which is basically very close to 15. That will give me that I can write it as 15 plus 1 की पावर 1011. ठीक है, so अगर मैं 15 plus 1 की पावर 1011 लिख सकता हूँ, so from that I can simply binomial by simply use a binomial expansion, I can write this particular expansion as 1011 c times of 0, 15 की पावर 1011 plus 1011 c1, 15 की पावर 1010 and so on up to 1011 times of the 1010 15. Okay, plus 1011
1011 C 1011 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट सा चीज, मैं अगर बाइनोमियल एक्सपेंड करूँ इस पर्टिकुलर नंबर n को, जो नंबर था n को, मैं अगर उसको बाइनोमियली एक्सपेंड करूँ तो मुझे कुछ ऐसा वाला टर्म मिलेगा। Now what a very important catch is this particular question is basically, आप यहाँ से लेकर, अगर मैं इस particular expansion में अगर मैं बोलूँ कि what are the first since this particular expansion is on the, इसका power है 1011, that means it will have 1012 terms। तो मैं अगर बोलूँ कि what is the 1011 terms, that will basically the first 1011 terms will be some quantity, some multiple times of 15, that can be written as 15k plus of 1 times, okay, because this will quantity will be 1। That means this particular जो number है that can be written as format of 15 का multiply plus 1, that can be written as 15 times of some number plus 1। okay, we are not very much familiar कि ये number कौन सा होने वाला है, because we have to basically get to the remainder, simultaneously we have to get to the fractional value। अगर उसके बाद अगर मेरे को नंबर को मिल गया कोई 15 मल्टीपल प्लस समथिंग क्वांटिटी विच इज नॉट डिविजिबल बाय 15, दैट मींस अ फ्रैक्शन अपार्ट, नॉट डिविजिबल, कोई अच्छा वर्ड नहीं होने वाला है। So from here, if I divide this whole 15 by 15, this number by 15, so I will see that this particular 15k will get divisible and will left out with k plus 1 by 15. That means this k is basically an integral quantity and which is added to a fractional quantity. An integral quantity added to a fractional quantity when we divide the number n divided by 15. Okay. So यहाँ से एक important सा चीज निकल के आ रहा है कि the first all the 1011 terms get cancelled out by 15, and the only term we are left out is basically 1 by 15 over here। So from there, from that particular scenario, we can say, we can talk about the fractional part। The fractional part is equal to 1 by 15 because this k is basically an integer। okay, k is an integer। and another very important thing that you must study, and you will study in the concept of fractional part function, you will basically the fractional part of x। okay, so a fractional part of x is plus fractional part of x plus some integer, okay, fractional part of x plus some integer is simply equal to fractional part of x। okay, so it doesn't takes matters whether you add an integer to any fractional part number। okay, so fractional part of x plus an integer is equal to fractional part of x, while I is an integer, while I is an integral values। okay, it is an integer। okay, so from here, I get to the fractional part of this particular number n, that is basically 40 over 2022 when divided by 15 is the fractional part is basically 1 by 15। So from this particular types of question, you can also say कि remainder क्या बनने वाला है। So from here you will say the remainder of this particular number when divided by 15 is equal to 1 also simultaneously। ठीक है। So from here, I'll get to the right answer to the question is basically option number C। I hope this particular thing is clear। ठीक है। So with this, let us move further and study about some other important concepts। okay, I guess it is too much for today's video। so with this, I want to end this today's discussion over here only। okay, so we will continue the remaining portions or the important topics in the remaining in upcoming lectures। okay, so I hope this particular discussion or the video was fruitful to all of you। okay, so if you are following this particular content, and if you're someone who is new to this particular channel, then definitely subscribe to my channel and start following all the maths content that I'm posting on my content, okay, on my channel। okay, so if you are someone who is preparing for JEE examinations or any form of competitive examinations, then you will be the most helpful person। okay, then you will get the most benefits from this particular lectures। okay, I hope this particular thing is clear, and if you like my video, then don't forget to like this video as well as subscribe to my channel। and with this, I take a leave from today's discussion। thank you।